So first thing aquatic biology we will study is the physico-chemical characteristics of fresh water and marine ecosystems. So you know fresh water means lakes, rivers, ponds. They are fresh water, low salt concentration, and marine means the sea. So these aquatic ecosystems, they are the lifeblood of our planet, because maximum amount of photosynthesis is done by phytoplanktons, not by the forest. From the sea a lot of oxygen is produced and lots of carbon dioxide is neutralized from the seas and water systems. So it is very healthy to have lots of healthy water ecosystems all around. So actually you can characterize it into freshwater and marine ecosystems. While both support incredible diversity of life, they differ significantly in their physico-chemical characteristics. Physical characteristics and chemical characteristics. That is the non-biological factors that profoundly influence the organism living within them. So what are the most important things? First physical factor physico-chemical, therefore the name is first physico-chemical factor is the salinity, how much salt is present. दोनों को देख के you can clearly see there is a difference in this picture. Different types of fishes or animals, organisms are present, and here also marine is totally different. The freshwater ecosystem is more interactive with the land, but the marine ecosystem is very less interaction with the land. It is exclusively water. Fresh water has got some interaction with the land. So the salinity, that the concentration of dissolved salts, primarily sodium chloride. So these environments are characterized by very low salt freshwater ecosystems. The freshwater ecosystems are characterized So let us talk about freshwater ecosystems. So they are characterized by very low salt concentration, less than 0.05 parts per thousand. हजार भाग में 0.5 part, 0.05 part, 0.5 part. एग्जाम्पल है लेक्स, ponds, rivers, streams, wetlands. Acha, now if you look at the ionic composition, the ionic composition is basically by calcium ions, bicarbonate ions, and sulfate ions, and chloride ions. They are present in much lower concentration. So the fresh organisms in fresh water have evolved sophisticated mechanism for osmoregulation, actively maintaining the balance of water and salts within their bodies. So last day which we have seen, osmosis. So mechanism of osmoregulation is to maintain water balance of their bodies. So less water enters into their bodies. They have evolved. They secrete out lots of dilute urine. Less salt is hypotonic, lower salt. Salt is rather absorbed from their urine. And the next part which will go is the marine ecosystem. That is the ocean, seas, estuaries, where fresh water meets salt water, brackish water बोलते हैं. Salinity is around 3.5%. That is 35 parts per thousand. बहुत ही ज़्यादा. The Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, coral reefs, the Great Barrier Reef, the deep sea, salt marshes and estuaries like the Sundarbans. So
इसमें बहुत है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, लॉट्स. So their challenge is living in an hypertonic condition, higher salt concentration environment. So they lose water and gain salt. So what they do, they remove salts and they conserve water in their body. The next physical character is the temperature. Temperature is a dynamic influence. Temperature plays a crucial role in aquatic ecosystem. So in cold-blooded organisms, their metabolic rate, glycolysis, Krebs cycle, etc., it is dependent on the temperature. So lower temperature, lower metabolic rate. Higher temperature, higher metabolic rate. Organisms in these systems are adapted to tolerate a wider range of temperature variation. मेरीन इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम होता है वो इट इज़ लेस अफेक्टेड. वाइल सरफेस वाटर में सीजनल टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेकिन अंदर का पानी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवन इन द आर्टिक रीजन ऊपर बर्फ़ जम जाता है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे मछलियाँ रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, स्टेबल टेम्परेचर रहता है. Marine organisms have narrow temperature tolerant ranges compared to their freshwater counterparts. So जो rivers या lakes and ponds में है, they can survive a wide range of temperatures, but these cannot. Next one is very important, dissolved oxygen concentration. How much oxygen, biological oxygen demand, how much oxygen is dissolved in the water, because animals, they require oxygen for their survival. More and more productive lakes जिसमें बहुत है ऑक्सीजन का concentration कम हो जाता है, and so or they cannot survive, like these eutrophic lakes. न्यूट्रिएंट रिच लेक्स, उसमें एल्गल ब्लूम इतना हो जाता है कि मतलब लाइट कैन नॉट एंटर, नथिंग कैन एंटर. एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिका, कार्बन is very important for aquatic plants and algae. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दे आर हाईली वेरिएबल. उसका सराउंडिंग लैंड के साथ इंटरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग कैसे होता है. मैराइन में उतना नहीं होता, इट्स मोर और लेस यूनिफॉर्म. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीएच एंड अल्कलिनिटी. पीएच कितना एसिडिटी है या कितना बेसिक है, on that their tolerance depends on this. So it is very important that for example soft water lakes with low buffering capacity are susceptible to acidification. Soft water में some salts like bicarbonates and all which are present, they act like a buffer, that they resist the changes in acidity and pH. उसीलिए बफर यूज़ करते हैं ताकि इफ़ यू समथिंग एसिडिक कम्स इनसाइड इट विल नॉट चेंज द पीएच, इट विल एब्जॉर्ब इट. तो इसमें दिस इज कॉल्ड बफर. सो दिस बफरिंग कैपेसिटी इट समहाउ इट सॉफ्ट वाटर में नहीं रहता है, लेकिन इन मैरीन इकोसिस्टम दे हैव गॉट अ ब्यूटिफुल बफरिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट इज वाटर फ्लो एंड टर्बुलेंस. The movement of water plays a crucial role in distributing heat, oxygen and nutrients. Very important, water के अंदर, even in oceans there are currents of water flowing. Ocean के अंदर भी नदी चलता है. It is known as the ocean stream. ऐसे नहीं है कि यूनिफॉर्म वाटर है,
उसके बीच में ही वाटर एक नदी जैसा चलता है. सो बेसिकली ओशन जैसे मैं यू आर इन द ओशन, यू कैन फ्रीली गो फ्रॉम हियर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू विल फाइंड बैरियर्स इनसाइड द ओशन. ओशन करंट ही, पानी उल्टा बह रहा है, यहाँ पे पानी उल्टा बह रहा है, तुम यू कांट गो थ्रू इट. देर इज़ अ वालास लाइन इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलिया के बीच में. हाँ, देर इज़ अ रिफ्ट, बीच में एक रिफ्ट रहता है. हाँ, पानी बहुत नीचे हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है. सो ऑर्गेनिज्म जब भी उधर से बीच से एक स्ट्रीम चला जाता है, ताकि ऑर्गेनिज्म ऑस्ट्रेलिया से जब इंडोनेशिया पानी में आ रहा है, वालस लाइन में रुक जाता है, वो जा नहीं पाता है. सो वाटर फ्लो एंड टर्बुलेंस ये भी हैबिटेट को शेप करता है. सो ये है तुम्हारा